experiential learning or experimental learning are almost the same as this is the learning of direct experience for what, as we know all Bloom's taxonomy, for abstract ideas. So it can be said as generated resource learning. As Sanjay sir was also telling at that time, we should provide some stimulant, some just strategies or some new things, so that students may just feel some interest, and so that they can connect themselves with their textbooks. This is rather important. So how to do and what to do, I have brought actually my experience, what I have done with my class 12 students. So first of all, these are the methods. Field trips. Field trips, I hope everybody already used to do it, because this is very actually national education policy. Yes, it is new, but the things are actually old. Wrap, you can say that wrap or the covering is new. Almost the things are same. What we are today calling experimental learning, this is actually learning by doing. Real life experience, this is very much important, because real situation, if we create in classroom or beyond the classroom, then only we can create out of the box questions. So field trip is based on observation. If we take the class 12 or 11, or we may also use it in class 9 or 10 also. I am taking the example of class 12. Suppose we are going to some place. Rajgir is near to us, so you love to go Rajgir. So students along with the teachers, if they have gone there, these places, there are different places. If they observe these things, and further we tell them to write before going what pre-reading task, draft a notice. As you are going for a trip, what should we do, what to keep, etc. Concept later they may create for their parents themselves, because this is the basis of literature, and already they are young adults, so they can do it very easily. One can be group leader, others can follow up the things. Then they can create a consent slip, and further they just create some list of do's and don'ts. All these are, don't forget, this is the part of learning only. Learning is happening. They are doing all the things, and they are involving in this actually in this field trip. So I hope they feel some interesting things. You have the 100 ways also, because all of us, we are intellectuals. I have my way, you people have 100 ways. I hope you better than my ways. So this is the share and care platform only. So thereafter, when they had returned from the place, they can write one narrative, which is the part of class 11. Then they can do some descriptive writings if they are in class 9. Diary entry. So these things, when they connect themselves with classroom situation as well as beyond the text
we are in the classroom. So I feel that they just feel elated and some create it is aroused. That is important, how to arouse their interest. Narratives, if we telling about this, blackboard is already filled. So tall tales, fables, story writing. वही रखा हुआ है. हाँ. There are number of tasks they can do, and they can connect their writing skills with these things. All these are the subparts of the narratives. Conducting experiments, they can conduct experiments, especially this is for science based learning. Actually, what is very unfortunate in Indian schools, that they are just studying science, but they are just far off the place of laboratory. How many students actually know the real experiments? Very less number of students, because Indian schools are actually not practicing this much, they are not focusing on this part. And nowadays adult tinkering lab is there, 2.5 lakh is approximately given by Indian government for this. School can apply for this, and if they find feasible and just appropriate for everything, then CBSE along with the central government is providing this sum for establishing the lab. This is very good. Adult tinkering lab, we have also actually applied for that. Let us hope that we may get it. Then simulations. Simulations are very much common to us. Oftenly we are used to us how to just approach for functional English. Means students, there are some dialogues, or there may be one dialogue and there may be another dialogue, A and B, role play, etc. Enactment or role play or debate also. You can supply some just hints, and another one they can just write arguments or debatable issues. So these all are very good at the airport, at the hotel, at the restaurant, at the field. What dialogues they may prepare, how to talk with their counterparts, their friends, they may use it. So I was telling very good example for English, that in sports they are using for basketball some throw or etc. So this is a wonderful example given by sir, that in sports especially, because they are rather excited during games, so they can use this stimulants, and if they are using English language is happening also. Storytelling for this concept map, wave chart. Some of us practice also. I think we all are practicing it. Nothing is new for you people. As I have just brought you one handbook, just hand out for you people. This is narrative writing diamond. So any one of you, if you explain it, that what is the use of this? Sir, please provide it. So, if you find it suitable, then you can use it, or any other ways you are using it, then it is okay.
overview about this. Sir, do you find it suitable or not? So we may sometimes provide these sheet to our students sometimes it is very true that sometimes they are sitting in classroom but they are thinking somewhere else because they are physically not connected with us, they are not mentally connected with us, and there may be various problems for these things because might be their own background, might be some classroom situation, etc. There may be 100 reasons for this. So students wants to be connected with the teacher and with the situation. So situational writing or situational story setting, etc. Once they are connected with you, certainly learning at least will happen. I do believe this. For understanding the For story. understanding this story. Already chapter Because sometimes they even don't know. You just told all the story. What was Then the again problem? he or she will ask, what is the storyline, madam? Means actually they are not connected. Sometimes, yes, they are unable to tell the title of the chapter. That what is the title of What is the title of the chapter? Action. And then we want some justification for the title. Unless if they are not connected, Yes. how they can do it. Next is that as sir was telling about the first chapter of First Flight, the letter to God. So this time I have experimented one thing for letter to God, that I have just yes, story as in traditional way we just share the story, etc. But finally, when at the climax we just reach at that how Lencho was feeling the crisis, etc. At that juncture, I have done just given certain one task that you just find some article, newspaper articles that what is the plight of Indian farmers, and you can connect with the Indian farmers and compare it other farmers of the world. What is actual their plight? So yes, I can't say that 100 means suppose we have 46 students or 46 students, obviously they did not bring, but 10 to 12 students have done it and very brilliantly they have done. So if 10 and 12 are other may others are very they are just gazing at them what actually they brought, etc. So certainly a few of them just interest create. And in this way, we can connect them with the real life situation also. We see this is the problem of Lencho, and this can be connected with our real world also. Focused imaging is new thing, new process. As focused imaging is you can see some image to them, and they will concentrate. You can see earlier we had one Wanda chapter, the 100 dresses. Yes. So there is a very nice story on it. Very nice. Why CBSE has removed I this don't fact? understand why it has been removed. The chapter. After, in spite Two of chapters that, back to the back. chapter should be removed, not Hmm. that, because this is very important. Very touchy chapter actually it was. And for the teenagers, that Hmm. theme is exactly Racial discrimination was there. Anyway, so focused imaging is one of the tools we can use it. Field observations, role playing, we all know it. English language teacher, we already have two plays with us. The proposal and one is the book that saved the earth. There are two role plays, so they can connect with playing the role, and they understand especially the role of either Lomo or Natalia or Chukov, etc. Model building is actually connected with scaffolding. Scaffolding, I hope everyone knows it because scaffolding, Jean Piaget's theory that how we are given some ladder to learning and various parts for that concrete to abstract. Then surveys. Survey is actually we have two surveys with us this time in question paper. Moreover, as a survey SWOT analysis and one is quest analysis.
So these analyses are given in CBSE sample paper, this question paper, latest sample paper, where these analysis is it is very easy. जैसे अभी हम लोगों ने करवाया जो हमारे बच्चे थे ALS करना था जिन्हें क्लास 12 के बच्चे, तो they have I have just brought it for you also. Just you can see how they have done this. This is one of the projects that is impact of OTT platform on teen. So they have surveyed, just they had gone different persons. Even they have visited our district magistrate also. They had gone there, they have taken the interview, and finally they have submitted it. And when they finally came to me, then we had our interview. So this is very important, and I'll ask one question to them. Now, what is your feeling? What do you feel right now? Just after coming from different places or persons, you have made number of eminent personalities also. So they said, yes, we had enjoyed it because they were in a group, collaborative effort it was. So learning is fun. It was filled with They felt it very good. So it is already based on data collection. Once they collected data, thereafter they analyze it, they can write essay, etc. Now, purpose relies on personal experience. What is the purpose? Personalized learning is very much popular now. As sir was telling, also individualized learning, often in the form of a story. Sometimes it may be in the form of a story, but it doesn't mean that it is always in the story form. It might be in a story form, but I have taken story because stories are actually common to 9 to 12. So plot, characterization, setting, climax, ending, if they just plotting it and etc., so they can just grasp it well, usually filled with details that are carefully selected to explain, support, sometimes underline the line, the main line. They have to do this story And writing. this time CBSE has designed such a line that CBSE is taking one line or another line, one extract to another extract, extra quality questions, mix and match, comparison, etc. Reasoning and assertion. Yes, so that's why it is. If they have already done it seriously, then I don't think they feel some pressure on them. All the details relate to the main point the writer is attempting to make. So they can just jot down one or more than one point, several points. They can talk with their friends also. What I do generally, I don't give anybody individual task. 4 to 5 in a group, I used to give them, and once they collaboratively do it, so fun with learning they can and more brains, more persons, more ideas, more brains, more ideas. So the learning happen. Advantage. We have already discussed the advantage of this enjoyable, motivating activity. Element of reality is compatible with principles of constructivism, because we are not giving here any moral lessons here that constructive, etc. Do this, do this, do this. No. Very gradually, actually, they are learning. And even also sometimes they may not know that they are learning the things, and once they are doing with their friends, and it became, you can say that it just give an indelible impression on their mind. So that will be permanent. I have designed one lesson plan from class 11.
Prashant sir. So The wedding planned by Nani Parkwala. yes, this chapter is also presented by CBSE. And this chapter is so relevant, especially with climate change. It's very nice chapter it was. Sometimes CBSE as an adventure was deleted. Now it is inserted. Elephant plant was inserted at that time. Caprous animal, if somewhere Yes. Look at the Judea. Yes, man is the most dangerous animal. When you see yourself in mirror. So elements of reality is compatible with principles of this is based on this principle actually. Enhances appreciation. I can give the credit to CBSE only, and this is actually designed by CBSE. I have put the words only actually. So enhances appreciation of the more subtle aspects of concept or principles. You may find that subtle means less particles. If they don't understand, then I hope that when this lesson plan will be done thoroughly, certainly it will be helpful for them. Promotes critical thinking. This is absolutely a pivotal issue for nowadays. How to create critical thinking among the young learners. So out of the box, etc. These questions. There are certain games you can sometimes play with them, as I was telling you. We are just used to stuck in the vast ocean of our classroom, and we can't use playful activities with them. But sometimes playing with students is good. It creates one bond with each other, and I may suggest fish bowl game for young adults. Fish bowl game. I have one link also how to play it. It is very interesting game. So if you sometimes we have the pre-board exams, students feeling bored, certainly they don't also want to stay in the classroom. So for a change, you people can do it. It is a good play. It is a good game. How to adapt it, time, content, expectations. We have to decide this. Then next is the cycle. The cycle plans are made. Actually, we have to understand the taxonomy of Benjamin Bloom first. That first of all, what we do? First of all, we start with knowledge. K word is important. So after K, understanding is important. Once they just gain some knowledge, they understand, then they experience the thing here. This one is inserted the new thing. If they experience by sharing, then certainly they can apply for new knowledge. Means one knowledge, it is applicable for one. The same thing can be applicable with other one. So they can understand the thing. Then they infer, and finally they reach at the last level of the which is analyzing and synthesizing. Means creating new situation for them and applying the new situation and solution for them, problem solving for them. Storytelling. Conveying of events in words, images and sounds, often by improvisation or embellishment. Sometimes actually this is for the kids. But yes, my young adults have done this. How they embellish the things, you can see it. Actually, this is made by class 11 student. Sanjay sir, have a look. Class 9 student. So this time I have decided to bring it out so that you can also see. Sir, beautiful presentation. देखिए बच्चों ने बनाया है और बड़ी मेहनत से बनाया है उन लोगों ने. So और जब वो ले आते हैं तो मुझे भी लगता है कि if I was told by my teacher I can't do in this way. They have आज के बच्चे के पास very creative. बहुत क्रिएटिव है वो बच्चे और obviously they are generation ahead. So इसलिए इनके पास
पास तो क्रिएटिविटी है, इसे मानना पड़ेगा। अब कैसे उनको चैनलाइज करना है, इट इज आवर ड्यूटी। लड़कों ने भी बहुत अच्छा बनाया है, मतलब दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट, बट हियर आई वांट टू से वन थिंग कि बॉयज ने भी बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं पूरा कैरिकेचर तो नहीं ला सकती थी लेकिन बॉयज ने भी बहुत सिलेक्टेड पीसेस को मैं लाई, मुझे लगा कि इन लोगों को लाना चाहिए। दे हैव एक्चुअली दिस इज द पोर्टफोलियो का असेसमेंट। उन लोगों ने क्या किया, राइट फ्रॉम द, मतलब मैंने कहा उन लोगों से कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स होगा, व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, तो आप लो, आप उसको लगाना है आपको। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड भी बन गया हमारा, और बच्चों ने भी लाया, मेहनत किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। आई हैव गिवन देम 1 मंथ फॉर दिस, कि गर्मी की छुट्टी में मैंने हम लोगों ने दे दिया और बड़े आराम से लिया। कोई बहुत ये नहीं कि नहीं लाए हो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग ऐसा नो, हमने ठीक है, जस्ट एट योर इज यू जस्ट ब्रेक इट टू मी, बट मेक मी श्योर दैट यू विल ब्रेक इट। मेरे को ला कर दोगे, ये बस मुझे बता दो। तो बच्चों ने फाइनली ला कर दिया। अब 11th क्लास में थे तो मैंने पोर्टफोलियो करवा लिया, 12th में आए तो एलएस करवा लिया। तो इस तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और फाइनली अच्छे से हो गया, मतलब एक फ्रेंडली वे में हो गया। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके हो हल्ला मचा के नहीं तो बच्चे भी ये परेशान हो जाते हैं। रोल प्ले की बात आती है, सब मैंने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया है। रोल प्ले जैसे हम लोग प्रपोजल जब कराते हैं, प्रपोजल तो रोल प्ले है ही है, लेकिन चूंकि रशियन बैकग्राउंड का है, तो रशियन बैकग्राउंड का है, तो पहले उन्हें हमने थोड़ी रशियन वेडिंग और इंडियन वेडिंग का कंपैरिजन करने दे दिया। ये तो सबसे फर्स्ट है, क्योंकि रशियन सोसाइटी में कैसे होता है, और उन लोगों को बता दिया कि कॉमन फीचर तैयार करो जो हम लोगों के वेडिंग के साथ उनका मैच करता है। वो उन्होंने ऐसा किया, स्पीकिंग प्रॉम्प्ट्स, उन्होंने कुछ क्लूज लिखे, डिस्कस विद देयर फ्रेंड्स और फाइनली दे स्पीक की व्हाट इज एक्चुअली, और दे वर वेरी एक्साइटेड एज इट इज दैट one thing is that like in Brazilian society also they want to have their relation with the rich one. The father of a daughter always wants that their daughter's relation. Actually geographically we may be different, but emotions of humans are almost the same. Emotions, country does not relate the emotions. Geographically we may be different, but almost human empathy, love, emotion, hate, etc. all these things are very common. Literature connects the people. Connects the people. Yes. So I have given these prompts to them. So then I searched to actually drama for them. These were wonderful drama. मैंने बोला कि बिफोर माई जस्ट बताने के से अच्छा है यू जस्ट वॉच द ड्रामा, और नेक्स्ट डे यू विल टेल मी कि व्हाट हैव यू सीन, हु आर द कैरेक्टर्स एटसेट्रा। सो दे एक्चुअली दे लव टू वॉच। उन्होंने देखा, कुछ वीडियोस देखा, एक मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी है, और बोला बच्चों ने कि मैम वी हैव आल्सो सर्च बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो उन लोगों ने फिर कुछ लिख कर लाया कि ये देखा उन्होंने, तो उनके लिए मुझे बताना थोड़ा इजी हो गया। जैसे रोल प्ले वो कर रहे थे, समटाइम्स होता है कि रोल प्ले वो करते हैं, दे आर रीडिंग द स्क्रिप्ट एटसेट्रा, लेकिन समझते नहीं, वो केवल वॉमिट करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को मैंने पहले मूवी देख लो, उसके बाद कल आओ, और कल आके मुझे बताना कि व्हाट हैव यू सीन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। नहीं, इंग्लिश रशियन मूवी है, वो उसको ये क्या है एक्चुअली, जो फेमस ड्रामा है ना एंटन चेखोव का, तो कई सारे वर्जन में वो बना है, मैं आपको शेयर करूंगी। बच्चों, मतलब बच्चे ने बताया मुझे, मतलब उन लोगों का जो फीडबैक था, उन्होंने बताया कि नहीं ये पढ़ाने से, क्लासरूम से मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और दे एक्चुअली अंडरस्टैंड वेरी वेल द कैरेक्टर्स ऑफ वो रशियन कल्चर एटसेट्रा, हाउ दे स्पीक, हाउ दे बिहेव, हाउ दे एक्ट
etc. So these are the ways we can do, means they experience the thing. अब तो ये नई चीज आ गई है, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि सीबीएसई ने भी हार्वेस्टिंग का भी एक नया स्किल ले आया है। वो एनीमेट में तो सारा हाँ, और ये इंट्रोड्यूस होना भी शुरू हो गया है, कई मतलब ट्रेनिंग्स चल रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय में या जहाँ स्किल एजुकेशन में पढ़ाई हो रही है, हाँ वहाँ भी ये हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है, हॉर्टिकल्चर हार्वेस्टिंग। तो ये हम लोग हम ऐसे काम पे लगा दिया जाएगा ना, जो शैतानी करते हैं ना वो कम हो जाएगा। हाँ, जितना उनको एंगेज करेंगे ना बहुत ज्यादा वो सीखेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप होगी। हाँ, अच्छा सरकारी करने के लिए किसको लगे? नहीं सर, टू मच हो रहा है शैतानी। सरकारी में होनी चाहिए का? नहीं, शैतानी भी होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव हो गया है। अच्छा, ये डिबेट में हम लोग डीब्रीफिंग से परिचित हैं। डीब्रीफिंग इज जो है जब सारे पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं तो लास्ट में एक को मिलता है मौका कि वो विल स्पीक अबाउट अ डिफरेंट, समटाइम्स ऑल पार्टिसिपेंट्स डीब्रीफ नटशेल में कि क्या हुआ। तो ऐसा करने से उनकी स्पीकिंग वाली प्रॉम्प्ट भी जो है वो हो सकती है, इसमें स्पीकिंग का पार्ट आ जाएगा। जल्दी करना होगा ना, 4 बजे तक करना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अब तो इसमें हम लोगों ने बात कर लिया। दिस इज मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग जस्ट कनेक्टिंग विद स्कैफोल्डिंग विद द स्टूडेंट्स। डिसएडवांटेज भी है इसका, सो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है। प्रिपरेशन टाइम, कॉस्ट कैन बी एन इशू इफ यू आर टेकिंग योर स्टूडेंट्स टू फील्ड ट्रिप एटसेट्रा। सर्टेनली कुछ चार्जेस होंगे जो आपको बेयर करना पड़ेगा। असेसमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। यूजुअली हम लोग कॉपी चेक करते हैं, क्लासरूम में पढ़ लिया, चेक कर लिया, वो तो इजी है, बट फील्ड ट्रिप में ले जाके असेसमेंट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा। देन फील्ड ऑब्जर्वेशन पे हम लोगों ने बात कर लिया है। Carl Rogers, experiential learning is equivalent to personal change and growth. Feels that all human beings have a natural propensity to learn. ये संजय सर ने उस समय यही बात कर रहे थे वो कि every human beings have some natural tendency to learn. The role of a teacher is to facilitate such learning. We have to provide such situation, some atmosphere, some stimulants, so that ki students may learn. Methodical trial and error, he already told us, procedure carried out with the goal of verifying means set tasks, then they are establishing the truth or not, sometimes be just a hypothesis on it. Experiments provide insight into cause. I am taking the help of Sanjay sir as insight word he has also thought like कि जो theory है learning of insight कि how to trial and error, फिर एक insight develop होता है जो माउस था वो कैसे उसमें आके फंसता है, बार बार he was trying, फाइनली जो है वो समझ जाता है कि अच्छा तो बेल बजेगी तो ये होगा, मीन्स वो insight theory वो develop होता है। तो इसी तरह से if students if they are just making some work after work, back to back work, they are engaged, then certainly insight certainly will develop, and once it is developed then learning will happen what we want it to. Surveys is very much important in regard of our English literature, especially this time, as we can see that pest analysis, SWOT analysis, data, चाहे वो असिम में हो, चाहे वो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल में हो, दोनों को कंपेयर करना, उसको निकालना, कंक्लूजन पे पहुंचना। समटाइम्स children are very much getting confused कि how to reach at the, मतलब whether they have to introduce it, कभी-कभी वो चंक में ब्रेक कर दे रहे हैं।
practical knowledge. वो क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत हेल्प करेगा, कंपेयरिंग विद वन डेटा टू अनदर, इस तरह से। तो कंपेयरिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल देने चाहिए, और उनको क्वेश्चंस नहीं बल्कि उनको कुछ जनरल आइडिया, मतलब इसमें जनरलाइज द आइडिया, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा वो सीखते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। कुछ सोर्सेस हैं, ये लिंक है, चाहे तो आप लोग इस पर सर्च कर सकते हैं, दीज आर द लिंक्स। और ResearchGate इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन फाइंड। हाँ, सर्वे एक्सेट्रा जो होता है ना, सारा सर्वे मैक्सिमम जो हम लोगों की CBSE के सोर्स आ रहे हैं वो ResearchGate से लिया जा रहा है। बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन बनाने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट। ResearchGate.in। फोकस्ड इमेजिंग के बारे में है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इमेजिंग enables student to relax and allow their imaginations to take them on journeys, experience situation first-hand, respond with their senses to the mental images formed. Sometimes we don't show images to them, we can use our imagining to them, plethora of some images means they can apply their all 6 senses, and finally they can use in, especially in writing story or narratives, etc. Simulations. The teacher controls the parameters of this world and uses it to achieve the desired instruction. Simulants. I have one project work, actually art integrated project, that actually at 3 o'clock it was for today, but अब तो आज ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप तो ये पास्ट हो गया है, 3:30 हो गया है। नेक्स्ट डे उसको दिखाएंगे। उसमें कई सारे सिमुलेंट्स हैं, स्पेशली विद डीप वाटर, कि वी कैन कनेक्ट चिल्ड्रन to their real classrooms and they can ponder about the fear factor, कि how they can relate themselves with fear, how to solve the problem, etc. तो उस पे कल हम इसको दिखाएंगे क्या क्या है इसका एम्फेसिस क्या है ना। लर्निंग का प्रोसेस हम लोग सब जानते हैं कि लर्निंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट। सो और हम लोग क्या चाहते हैं, वी जस्ट फोकस ऑन 1 2 3 4 5 6 मार्क्स, और किसी को अपना जो पास्ट 8 और 9 का मार्क्स है, मुझे नहीं लगता कि याद होगा। It doesn't matter. ये याद नहीं होगा। CBSE के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले ही बॉक्स में दिया हुआ है कि डू यू नो द नंबर ऑफ योर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन नर्सरी और एनी अदर क्लासेस means before board? Of course not, because finally जो है ये देखा जाता है कि whether we have excelled in our life or not, so this matters the most. लेकिन कई पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझते हैं, और पता नहीं आने के बाद बच्चों का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि उसे कैसे इतना आ गया, उसे क्यों नहीं आया। ये तो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि बच्चे कोई मशीन तो है नहीं, बच्चे को मशीन तो है नहीं। समझा देते हैं, लेकिन कभी कभी सर उनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये तो मतलब आपको देखिए कि आने के बाद उनको इतना, मतलब उसके बाद उनको लगता है कि व्हाई आई हैव ब्रॉट देम, मतलब कभी कभी ये सब फील होता है बच्चों को। 98 भी आएगा तो बोलेगा कि 2 नंबर कम है। अच्छा, एक बच्चा बहुत अच्छा है, उसी का भाई है और दोनों भाई बहन है। अब मान लीजिए कि उसको 2 नंबर भाई को ज्यादा आ गया और उसको कम आ गया, तो वो फिर कंपेयर करना शुरू करके इसकी कॉपी में 2 नंबर कहाँ चला गया, क्यों चला गया, एक ही टीचर से पढ़ते हो। So many questions. आप टेंशन मत लीजिए, वो अपने माँ बाप को भी समझा देते हैं। Comparison hurts the हाँ, child. ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बच्चे की मेंटल स्ट्रेस रहता है। तनुश्री मैडम, बोलिए सर। हमारे बगल गिर के एक लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है, UKG में। अच्छा, उसकी मम्मी बोली देखो तो उसका नंबर आ गया बढ़िया, तो करे कि मम्मी वो है हम। तो बहुत अच्छा जवाब मैं कहूँगी सर। मुझे लग रहा है कि दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर उसने दिया है, इसलिए कि मैं हूँ, मतलब आई एम इंडिविजुअल, ही इज आल्सो इंडिविजुअल, जो भी है ABC। तो ये तो
बच्चे से बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर है। और वो भी यूकेजी वो भी के यूकेजी के बच्चे से। हाँ, वो बोलती है। उसने बहुत सही जवाब, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो मैं भी अलग हूँ, वो भी अलग है, तो एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया सर। उसका आंसर अपने आप में बता रहा है कि फ्यूचर में वो क्या करने ये साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिकल, पता है उसने तो साइकोलॉजिकल पकड़ा सर। फ्यूचर उसकी मम्मी का भी पता है, उसका तो पता ही नहीं। तो सब कुछ पता है तो क्यों सोच रहे लेट्स होप हैं? फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको सब कुछ पता है, फिर भी हम लोग को पता करवा रहे हैं। पता इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोग टेंशन काहे लेते हैं? हम लोग बच्चा अपना टेंशन लेना चाहता है। हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, टेंशन कर ले रहे हैं। एक बच्चों को अननेसेसरी स्ट्रेस देना पेरेंट्स के साइड से हो, किसी के भी साइड से हो, अच्छा नहीं अभी- होता है। अभी और देना रिसेंट- भी नहीं चाहिए। एक पेरेंट को कॉल किए कि लेकिन आपका बच्चे बच्चा नंबर के पीछे स्कूल नहीं आ रहा, तो उनका फी भर रहा है ना जी। स्कूल का फी उसका डिफॉल्टर में नाम नहीं ना है, तो आप पहले टेंशन ले रहे हैं। बोले अब हम क्या बोले? हाँ, बोले फी भर रहा है ना आपका, बोला हाँ भर रहा है, तो बोले बस हो गया खत्म, हम पहले टेंशन ले रहे हैं, आवेगा ना। और इंग्लिश में तो कहते हैं कि पढ़ने का जरूरत नहीं, सब जानता है। और एक टीचर ने कॉस्ट को आता है लोग को और जानता है कि कुछ भी देखने में घुमा फिरा रहे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आ ही जाएगा। लेकिन 40 मिनट्स हो गए। अब ऐसा नहीं है, अब जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है, इस बार 50% तो लिटरेचर होता है। हाँ, और लिटरेचर में भी critical thinking के questions हैं। अच्छा, question नहीं समझ पाएगा तो लिखेगा कैसे? पूरा क्लास उसका सब CBSE का चार्ट writing and grammar. What is the level of grammar? Everybody knows that what is the level of students' ये grammar. प्रेशर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों पे ज़्यादा होता है, जो उसके पेरेंट्स समझते हैं कि भाई ये एकेडमिक एक्सेलेंस ही